Okay, so let me share my screen. Is it visible to you guys? Yes. Okay, so as I told you, that particular installation will take, as I told you, it may ask you to reboot, correct? So as you can see, it is asking to for reboot. So let me close it, and it will reboot now. So after that, what I have to do, I have to log in with the same user account. In my case, it is root, okay? But in your case, user may be different, okay? Got it? Even I'm not sure why I'm getting 5 users here. Gaurav, I think you have joined with 2 devices, correct? I think yes. Let me. No, not required, not required actually. Because I'm No, getting I think 5 I'm count. connected with only one device. I'm I'm not connected with one sure, device only. but I'm getting 5 participants here. Okay, not an issue. So you can take me out from there. No, not required. Okay, so It machine can is work. rebooted now, and now what I have to do, I have to log in with the same user, okay? So that installation again will take time. Like after login, you have nothing to do. It will automatically initiate the installation, okay? As you can see, installation will automatically resume from where you have rebooted the machine, okay? So let it be, it will take some time. So in a meantime, what we can do, we can create new virtual machine, and we are going to deploy hypervisor now, okay? And from here, I will select, I will install operating system later, Linux 5x and other, it is fine. And let me name it as Gen server. Deepak, this is for you, like why you was getting that error, like your machine is getting powered off again and again, correct? Yeah. So what you have to select here, you have to select Linux and other Linux, okay? Linux Linux, or VMware exe. no, Linux machine, because it is a Linux flavor, na? बट लास्ट मतलब जब फर्स्ट क्रिएट किया था तो वो उसी ऑप्शन पर गए थे, तो वैसा तो कुछ आ नहीं रहा था। नो, एक्चुअल में क्या होता है, जब जब ISO अपडेट्स हो जाते हैं ना, तो एक्चुअली VMware ESX इज अ डिफरेंट थिंग, इट इज अ ESX, वो खुद एक हाइपरवाइजर है VMware ESX, ओके? सो अच्छा, इसी कारण मुझे वो इश्यू आ रहा है। हाँ, हम प्री डिफाइंड टेम्पलेट हमेशा काम नहीं करेगा, ओके? क्योंकि मैंने दोबारा भी उस मशीन को क्रिएट करने की कोशिश की, क्रिएट तो हो गई, बट उसके बाद दोबारा से वही इश्यू आ रहा है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वो कर लेना, ओके? सो सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। माय वर्चुअल मशीन का नाम हम जेन सर्वर 01 देंगे, क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड इस मशीन को हम हार्ड ड्राइव एटलीस्ट 100 GB देंगे। एंड इस मशीन का मेमोरी मैं इंक्रीज कर देता हूँ अप टू 10 GB 10240। and one more thing, I have to make connection to host only. Okay, why I have done this? Because मेरा जो DHCP scope है वो सिर्फ host only नेटवर्क पर ही चल रहा है, मींस मेरे प्राइवेट लैन पर चल रहा है, ओके? उसको मुझे इंटरनेट से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड कमिंग टू सर द, मैं ये बोल रहा था कि यहाँ से इतने इस प्रोसेस से क्या मैं अपनी हार्डवेयर पर करूँ क्या परफॉर्म, तो मैं मेरे पास लैब भी बन जाएगी। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। द रीजन इज दैट, नहीं, रिकॉर्डिंग तो आप शेयर कर देंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि कोई इश्यू आता है तो अभी आप हैं तो मैं रिजॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा, करेक्ट। देखो, दो चीजें होती हैं क्योंकि कि एक तरह लिसन से प्रोसेस तो मुझे पूरी पता है, लैब कैसे क्रिएट होगी, लिसन मुझे लिसन पूरी फटाफट जो। अरे मेरी बात सुनो, होता क्या है कि राइट नाउ हम 3-4 बंदों के साथ है, करेक्ट? सो हम यहाँ पर अगर टाइम वेस्ट करेंगे, अगर तुम्हारे हार्डवेयर परफॉर्म करेंगे,
तो वो थोड़ा स्लो होगा, करेक्ट। सो रीजन ये है कि रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर सकता हूँ, अगर कोई एरर आता है, कोई एरर कोड आता है, कोई भी इशू आता है, मुझे स्क्रीनशॉट अगर भेज दोगे, मैं उसको गाइडेंस कर सकता हूँ, करेक्ट। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो सेपरेटली हम कनेक्ट हो जाएंगे ट्रबल शूटिंग के लिए, ठीक है। बट अभी प्रॉब्लम क्या होगा कि ट्रबल शूटिंग के चक्कर में जो 2 बंदे हैं उनका टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट। सो वो हम अलग से कनेक्ट कर लेंगे। And display setting, I can mention like this, because this is my monitor resolution. And also I have to mount ISO media for hypervisor, and into the processor I have to select this one. Like, why? Because I will be going to create virtual machines on that hypervisor. So we are done. Close it, finish it. So before we power on this machine, let me show you here. Installation is still going on, and now it is saying 468 minutes remaining, which is not true. Okay, so please do not get afraid, sometime it happens, वो कुछ भी show करता है, okay, but as per my experience it will take up to 30 minutes for my hardware. Okay, so in parallelly we can power on the Gen server 01, which is a hypervisor, and install it. So listen, Citrix hypervisor का जो installation होता है, it's a totally Linux based machine. So during this installation, you cannot use mouse. You have to operate this with keyboard itself, okay? Because it is in CLI mode, like command line mode, okay? Any doubt? किसी ने कभी Linux install किया है इससे पहले? हाँ किया हुआ है। Okay, so nothing complicated. You just have to use tab key, space key, and enter key. Got it? So it will take some time to get next screen. In a meantime, we can check this as well. It is still taking time, so let's wait for this. So in a meantime, let me show you my like storage. I'm using 250 GB of SSD, like it's a NVMe drive, so operations are faster. And apart from that, I'm also using one Seagate expansion drive for 1 TB. It is also SSD. Okay, so if you have at least, means for your test lab, you must require at least 512 GB of hard drive. Okay, coming to the memory, so as you can see, my memory is 32 GB for now. Okay, so if you have 32 GB, that will be great, but you should have at least 24 GB of RAM. Okay, it will be great. Okay, but below this I never recommend. Okay, so going back to here, as you can see, we have got the screen. Now I'm just using my keyboard only, and I have to select the keyboard layout, so US will be fine. After that, just hit OK, and as usual, we have to accept the license. If you want to read, you can read, but right now I'm accepting it. And we are going to utilize thin provisioning, and 100 GB, it is my hard drive. Okay, what I have selected, what I have assigned to my hypervisor. Simply hit OK, and our installation media will be local media that I have already mounted. It is searching for the repository now. Let's wait. If you want to verify your installation media, you can verify, but it may take some time to verify the installation media. But I'm pretty sure my installation media is perfect, so I do not require to verify the installation source. Okay, so I'm skipping this, and now we have to create a password for root user. So I hope you Yeah. guys,
I hope you guys are always aware that there is a root user in Linux, correct? नींद आ रही है, The default user. मूवी वही नहीं दिखती रात में बैठ के? Please unmute your microphone. Who is हैं? this? क्या? क्यों? सीरीज वगैरह, वेब सीरीज वगैरह कुछ नहीं? Hello? कौन है ये? Who is this? Okay. So now it is asking for networking. Am I audible? Yes, sir. Okay. So now it is asking for network configuration. So as I have already running one DSCP scope in my infra, so I will use DSCP scope to get IP. You can also configure the static IP address as well. Now it is asking me to provide the host name for this machine. So I'm mentioning here gen server hyphen 01. Okay. And DNS server, all those server will get listed with DSCP itself. Now it is asking to select me the time zone Asia, then Kolkata, because Delhi is not listed in Citrix ISO. Okay. Now, what is NTP? Do you have any idea what is NTP? Anyone? Guys, Sir, forget it. it's a network time protocol. Network time. Or And synchronize the time. correct. And the port number is 123 for network time protocol. Correct. Yes, yes. Basically, what it will do, it will sync the time from the domain controller. Correct. Whatever time is there into your domain controller, it will sync that time. Okay. To all of your virtual machine or physical machine, whatever the machine is joined into the domain, it will sync time from domain controller. Correct. So NTP, and I have to install this now. Okay. So again, it will take some time for the installation. So going back to DDC. Okay, it is not prompted us so far. Okay, so as you can see here, all the prerequisites has been configured. Okay, and now it is installing the core components, and as you can see now it is showing 6 minutes remaining. Okay, so let's go back here. It's 72% now. So guys, what I'm doing, I'm just installing the things. Okay, I've created one virtual machine with Windows Server operating system for DDC, and after that I've installed those components like Citrix virtual apps and desktop. Okay, in it I have configured nothing so far. We will configure those things in upcoming sessions. Okay, and in the second one, what I did, I just installed one operating Linux operating system as a virtual machine, and we will configure this as a hypervisor. Got it? Only installation part we are uh, covering right now. Okay, any doubt? No, sir. Configuration we can cover in the morning. Okay, but not right now, because you know, if I cover multiple things with you guys right now, it will be, you know, bulky for you guys. Okay, so let me, okay, we have all the guys connected. So कोई भी ऐसा बंदा है जिसके पास ISO फाइल्स नहीं है अभी तक, जो मैंने अभी इंस्टॉल करी हैं? सबके पास ISO फाइल्स हैं? हेलो, Yes, sir. ठीक है, अगर किसी के पास ना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई डाउट हुआ अभी तक? लाइक डोमेन कंट्रोलर यू हैव टू क्रिएट इट बाय योर ओन। ओके, लाइक हम MCSA का बेसिक नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें मैं डोमेन कंट्रोलर बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, करेक्ट? बट Correct. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप डायरेक्टली पिंग कर सकते हो, लाइक ओके।
DDC, it will take some time, and hypervisor will also take some time. Okay. So कल का टाइम क्या फिक्स करें, मुझे ये बताओ आप सब लोगों के अकॉर्डिंगली, बिकॉज यू नो मैं तो दिन में भी अवेलेबल हो सकता हूँ या फिर अर्ली मॉर्निंग 6 बजे भी अवेलेबल हो सकता हूँ। ओके, लेकिन या फिर सेम टाइम रखें 10 बजे का, कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? No, हेलो, sir. ठीक है। दीपक, तुम्हारा जो ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट है ना, वो हम दिन में कवर, वैसे कुछ रहा नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना उसमें क्या करना है, कैसे मशीन ये हाइपरवाइजर हाँ, क्रिएट करना मुझे है। बस ये बता दीजिए, मैं दोबारा से ही लैब क्रिएट कर रहा हूँ। बस ये जैसे कि ये कौन सा सिलेक्ट करना है इसमें एक्चुअली, ये जैसे कि मैं हूँ लिनक्स, इसी में, लिनक्स और वर्जन कौन सा? 5x64 बिट का कोई ऑप्शन आएगा वहां पे। ओके, नहीं आ रहा आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। है। 5x लेटर कर्नल, इधर देखो, मैं ये बता वर्जन देता तो हूँ। बहुत अरे सारे इधर हैं, बट देखो, इधर देखो, सिलेक्ट स्क्रीन स्क्रीन पे देखो, एक मिनट, हाँ बताइए। लिनक्स दिख रहा है सामने। कर्नल 64, एक मिनट। अदर दिखा? अदर लिनक्स 5.x और लेटर कर्नल 64 बिट, राइट? वही है स्क्रीन पे जो तुम बोल रहे हो, उसको सिलेक्ट कर लो, नेक्स्ट कर दो। ओके, so as you can see now, it is asking if you want to install any supplement pack. No, we do not require any supplement pack so far. So now it is completing the installation. Again, it will take a while. Let's go back to DDC. It's still installing. It may take some time, no worries. So Gaurav, I have also shared those ISO files with you, correct? So I hope now you will be able to complete the installation what I did now. Any doubt in that? I just downloaded it, but not installed on it. So I I just think downloaded those files actually. now you can install, correct? Yeah, I'll do that. I'll do that. If you need a recording, please let me know. I will share that recording. Okay, you can refer Sure, that and recording. Okay, even I will ask you as well if I need it. for recordings, correct? Yes. I will share. I will share. Not right now. Sure. It's 11 o'clock. Okay. So just remind me in the Sure. morning. I will share both recording with you. Okay. So this is just Okay. an installation part. Okay. So today we have completed the installation part, and tomorrow we will cover the configuration part. Okay. Like how to create a site, how to add hypervisor that we have created Gen server 01 to our site. Okay. Those kind of core configuration we will cover tomorrow. Okay, in the evening itself, like 10 o'clock, or I will try to connect somewhere around 9 o'clock in the night. Okay, so again, as you can see on the screen, there is nothing complicated. Okay, it will automatically install the things, and at last it will ask to reboot the machine. That's it. So Gen server also installing. So Pankaj, do you have any doubt in that? This is just the installation part. Okay, No, no, sir. No, sir. No I doubt. hope all of you will get those machines in your infra by tomorrow. Correct? It's your task. Yes. So जो मैंने बताया है सिर्फ इतना ही करना, इसके आगे कुछ भी मत करना। रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग कल कवर करेंगे। ओके, Okay. सो उससे ज्यादा करोगे तो मशीन को करप्ट कर दोगे या कुछ और इश्यूज आएंगे, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। हाँ, इंस्टॉलेशन में अगर कोई इशू आता है तो मुझे कॉल कर लेना। ओके, एनी टाइम। एंड दीपक, तुम्हारा जो ट्रबल शूटिंग वाला जो पार्ट है वो मुझे दिन में रिमाइंड कराना कल एक बार, तो दिन में उसको खत्म कर लेंगे। ओके, वैसे मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ बचेगा, तुम कर लोगे उतना तो। ठीक है,
हाँ, मैं ये हाइपरवाइजर ये जो आपने बताया ये लिनक्स वाला डाउनलोड करके देख रहा हूँ। यदि इशू नहीं आता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लैब तो मैं पूरी बना ही लूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है मुझे। अरे नहीं आएगा एक्चुअली भाई। क्या, ट्रबल शूटिंग आ रही थी, इसी कारण मैं कर नहीं पा रहा था। वो इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि तुमने वो एरर कोड गूगल पे सर्च नहीं किया क्यों आ रहा है। करेक्ट। एक नहीं बार अगर किया सर्च था मैंने, उसमें ये भी बताया था कि वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके वो कुछ कोड रहता है, उसको चेंज करके सेव करना फाइल। वो चेंज भी देखो किया तो कुछ देर चला, फिर उसके देखो बाद फिर क्या दोबारा होता आने है, लगा। गूगल हर चीज का आंसर देता है, करेक्ट। लेकिन हमें करेक्ट सवाल पता होना चाहिए कि हमें उससे पूछना क्या है। तुम कुछ भी पूछोगे वो कुछ तो भी सर्च रिजल्ट बता देगा, करेक्ट। नहीं तो नहीं, ट्रबल शूटिंग वही थी, मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी थी उसकी, ट्रबल शूटिंग का दिया था और प्रोसेस भी मैंने यूट्यूब पे वही मत की, देखा बट करो। उसके यूट्यूब पे मत देखा करो, रीजन ये है कि यूट्यूब पे 25 लोग 25 टाइप के वीडियोस डालते हैं। कुछ तो भी रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, ओके। सो सम टाइम काम कर जाता है, लेकिन हाँ हमेशा काम नहीं करता है, ओके। तो अच्छी बात है, वैसे ट्रबल शूट करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या होता है कि गलतियां होंगी तभी सीखोगे, ऐसे डायरेक्टली तो कभी नहीं सीखोगे। मैं भी एक टाइम पे, मुझे भी नहीं, कुछ नहीं आता था। मैं अरे मैंने भी मैं यहीं से ऐसे सीखा है, नहीं। मैंने भी वहीं से सीखा है, गूगल से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, या फिर किताबों से सीखा है, किसी सीनियर से सीखा है, पूछ पूछ के ही सीखा है। मीन्स ऐसा डायरेक्टली नहीं नहीं, होता है, ट्रबल टाइम शूटिंग लगता है। तो मैं अपनी तरफ से करता हूँ सर, जब बिल्कुल भी बहुत मतलब वो हो जाता, बिल्कुल भी नहीं होता है, तभी मैं रीच आउट करता हूँ, नहीं मैं खुद नहीं करता कि यार मतलब इतना बता दिया उसके बाद भी एक ही चीज को 10 बार पूछे। पूछूंगा तो नई चीज पूछूंगा मैं। हाँ ठीक है, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना देख नहीं लेना, होता था। इसमें कर लेना। ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब भी आप ये कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसमें कवर अप कर लेना, लाइक एक डीएनएस रिकॉर्ड हमें अपडेट करना पड़ेगा फॉर हाइपरवाइजर, लाइक जेन सर्वर 01, ओके। सो पहले हम देख लेते हैं इसको कोई आईपी एलोकेट अभी तक हुआ या नहीं। नहीं, अभी मशीन स्टिल लाइक इन इंस्टॉलेशन स्टेट। सो जैसे ही इस मशीन को आईपी एलोकेट होगा, हमें एक डीएनएस रिकॉर्ड इंस्टॉल करना होगा, लाइक कॉन्फ़िगर करना होगा। हमें एक ट्रिपल ए एंट्री यहाँ पर ऐड करनी होगी, करेक्ट। वाई, कोई बता सकता है क्यों करनी होगी? Name resolution. करेक्ट, नेम रिजॉल्व हमें कराना पड़ेगा, करेक्ट। सो हम क्या करेंगे, होस्ट नेम के साथ आईपी एड्रेस यहाँ पर मैप कर देंगे। तो उसके बाद हम आईपी एड्रेस से पिंग कराएंगे तो फॉर श्योर पिंग आएगा, क्योंकि आईपी जो जा रहा है वो डीएससी पे से जा रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर हम होस्ट नेम से पिंग करेंगे तो पिंग नहीं आएगा। उसके लिए हमें एक न्यू होस्ट एंट्री यहाँ पर करनी पड़ेगी, ओके। सो मैं अभी करके बता देता हूँ, बस आईपी एड्रेस मिल जाए, अभी तक नहीं मिला है, ओके। Now it is rebooting. Installation is almost completed. So let's wait to reboot the hypervisor. Now let me refresh here. No IP address so far. Let's wait. So at this screen, sometime it may take up to 15 minutes. Why? Because we are installing hypervisor on hypervisor, means our first hypervisor is VMware Workstation Pro, and on that VMware Workstation Pro we are installing another hypervisor, okay. So in my case it is faster. Let's wait for the DSCP scope and check. Okay, so as you can see now it is getting IP address from my DSCP scope, it is 10.51, okay. So now if I refresh my DSCP scope here, as you can see, one IP address is allocated to gen server 01. So now what I have to do, let me show you CMD. If I try to ping this with IP address, I will get ping, okay, 192.168.10.51. So as you can see, but if I try to ping with host name,
gen server -01. No response, as you can see. Correct. So for the same, we have to make one DNS record here into the DNS, new host entity, and it's gen server -01, then the IP address 192.168.10.51 in my case. So in your case IP may be different. Okay, इतना ध्यान रखना. Okay, जो भी DHCP scope use करोगे वही IP डालना है. Okay, I have added the host. Now let me try to ping now. So as you can see, we are getting ping from hostname as well. That means our hostname is getting resolved by DNS. Got it? Okay guys, any doubt so far in this? No. Let's go back to DDC. Okay, so our DDC is almost done now. Let me click on next. Let's wait for it and let me launch the studio. So if you are good, I can create a site in this session as well. But if you are want to sleep, we can connect tomorrow. Okay, if it is getting lengthy for you. Okay, Yeah, tomorrow. tomorrow will you fine? Yes, sir. Tomorrow will be fine. Okay, so I will try to connect by 9 p.m. I will try for 9 p.m. But somehow if I will not be available, so 10 p.m. is sure. Okay, I will ping you the Zoom invite before 10 p.m. Okay. Okay. Yes. Sir. Okay, guys. So please follow the recordings. I will share the recordings with you soon. Okay. Follow those recordings and please create दैट सिंपल लैब विथ यू. कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो मैंने बताया है सिर्फ इतना ही करके छोड़ देना है. ठीक है, बाकी कल जो मैं बताऊंगा फिर बाकी नेक्स्ट उसमें कवर करना आप लोग. ओके सर ये Okay. मैक्सिमम डिस्क साइज क्या रखना है इसका? 100 GB एटलीस्ट, ताकि हम 2 या 3 मशीन्स क्रिएट कर सकें. ओके 100 एटलीस्ट चाहिए, लेकिन 100 से ज्यादा अगर स्पेस अवेलेबल है तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है 150 कर देगा. 150 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 100 मिनिमम बताया मैंने. ठीक है. ओके गौरव, एनी डाउट इन दैट? गौरव, पंकज, किसी को कोई डाउट है? No, no, sir. No, no doubt. Okay guys, so bye bye, good night, and we will connect tomorrow. Okay, Yes, sir. good night, sir. have a nice day. मैं स्क्रीन मैं सॉरी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा. ओके, एंड उन रिकॉर्डिंग्स को फॉलो कर लेना. ओके Okay, sir. ओके, बाय देन.